up to which we have discussed in the last class? Ma'am, finding the kth root. Okay. Just a minute. This one, up to question number 18, we have discussed, right? Yes, ma'am. Okay, so what is the next question? Ma'am, I have a doubt on question number 6 once. Can you repeat the logic? Which question? Question number 6. And that harmonic one. In harmonic में so here the question is, write a Java program to compute the harmonic mean. The harmonic mean is defined by this given formula. Okay, harmonic mean is computed by this formula. So what you need to do? वो समेशन वाला कैसे होता है वो समझ नहीं ये समेशन इसे लूप में डालना है ना तुम्हें. You need to write it in loop. It means a by a1 plus 1 by a2 plus 1 by a3 plus 1 by it will be a4. So ऊपर क्या रहेगा n divided by this values. Okay, ma'am. Okay, so here you are going to take different inputs for a1 a2 a3 an. So n है, अगर 5 input करना है तो तुम्हें कितना different fractions निकालना पड़ेगा? 1, now this is 2, this is 3, then how many different numbers you are going to take? 5. 5. Okay. Yes, ma'am. So I erase the screen. So now come with the question number. $19. Ma'am, can you show that kth root one once more? Which one? That 18th one, kth root and other than that Newton's method to find a root. I'm having a doubt in that. Okay, just a minute. Let me open the whiteboard.
Okay, now so the formula here is when we are supposed to find the question. Read the question. Write a Java program to compute the square root of a number using Newton's method. So in Newton's method, so it is given we are going with the two value G1 and G2. So in order to compute the value of G2, we need to write यहाँ पर हो जाएगा कितना और G1 plus n by G1 whole divided by 2. Now this is the formula. We are going to repetitively use this formula until and unless कब तक use करेंगे जब तक G1 minus G2 क्या नहीं होता है, it is greater than 0.001. Okay, so we are repeatedly going to use this one until and unless it is greater than 0.001. G1 is equals to G1 plus n by G1 whole divided by 2. So here what will happen? Now take value for G1. एक ले लो जिसका हमें Newton's we need to find out the square root. Now let take my value of एक number बताओ. Let 9. So we need to compute the square root of 9. So initially G2 को कितना initialize करेंगे? We are going to initialize G2 as 9. Okay, and again G1 is equals to G2. First position interchange होगा. तो G1 में आ गया कितना? G2 का value. So next compute G2 is equals to G1 plus n by G1. G1 कितना है? What is the value for G1? 9. 9. Okay, plus again n कितना है? N is your 9. जिसका हम लोग को square root compute करना है. That is the value of n. So n is 9. 9 divided by 9 whole divided by 2. तो ये कितना हो जाएगा? 9 plus 1 divided by 2 कितना हो गया? 5. 10 by 2 5. So पहला स्टेप में हम लोग को कहाँ पहुंच रहे हैं? Just we are just reaching to the half of 9. Half of 9 को reach कर रहे हैं, isn't it? Yes, ma'am. Okay, so instead of taking G2 as 9, we are taking G2 is equals to n by 2. G2 को हम लोग ले रहे हैं कितना? n by 2. तो n by 2 कितना होगा? Again the same thing, 9 by 2. 9 by 2 मतलब 4.5. Okay, as we are initializing it as a double value. So ये क्या हो गया? 4.5. So now, what is the G1 value? G1 is equals to 4.5. Now compute the G2 value. G2 कितना हो जाएगा? 4.5 plus what is the value of n? 9 divided by 4.5 whole divided by 2. तो कितना हो गया? 4.5 plus 9 by 4.5 कितना होगा? 2. I am not doing it. Divided by 2. 3.25. Yes? 3.25. 3.25. So what is the value here? No, ma'am. Answer. Answer 3.25. Yes, ma'am. Okay, 3.25. Now you are reaching to the answer. So G1 तुम्हारा कितना है? What is the value of G1? 4.5 minus 3.25. So what will be the value? Is it greater than 0.001? Yes, ma'am. So we need to do और एक step जाएंगे. So we need to cover another more step. So when we are going to cover it another more step,
अब G1 कितना हो गया? Your G1 is equals to 3.25 and G2 is equals to 3.25 plus what is the value of N? 9. 9 divided by 3.25 whole divided by 2. तो कितना हो गया? Ma'am, 3.0096. Okay, you are getting 3.0096. Again you reach closer to कितना आ गया? 3 तक आ गया. So 3.25 minus 3.0092 is greater than 0.001. Yes, ma'am. So we और कितना step हमें और एक जाना पड़ेगा? We need to go for another one more step. Yes, ma'am. Okay. So here what will be the G1 value? 3.0092. Now compute G2. So G2 is equals to 3.0092 plus N is 9 divided by 3.0092 whole divided by 2. What will be the answer? Ma'am, 3.4 times 1, then 1. 0, 4.0, then 1. 3.4 times 0 and 1. 1, 2, 3, 4, then 1. Divided by, sorry, not divided by 2. Okay. 3.40 is 1. Ma'am, 40. There are 40. 40 is 1. Now 3 point G1 minus G2. My G1 is 3.0092 minus 40 is 1. Is it greater than 0.001? होगा क्या? Yes, ma'am. Is it greater than 0.001? I Yes, don't think so. हो गया यहाँ पर 9 आ Ma'am, गया. it is ये कितना हो गया? 1. 0.08. ये 8 है. This is 8. 0, 0. Now this value, ये देखो तो ये value 0.001 से बड़ा है या छोटा है? हम बड़ा है. ये बड़ा है. ये 8 है. हाँ बड़ा है. So और एक स्टेप ज्यादा जाओगे. You need to go with Yes, another ma'am. more step. यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3.401 001. So what will be the answer? Here, what will be the answer? कौन सा करेक्ट है? Ma'am, 3. The answer here is 3. Okay. So when we are going to subtract 3.001401 minus 3. So answer क्या होगा? यहाँ पर false हो जाएगा. Now this value will be false. So the Yes, ma'am. square root कितना आ गया? 3. 3. So in the same manner we are going to compute the nth root. nth root भी यही formula use करके compute करना है. तो यहाँ पर square root के लिए क्या लिखा गया है? 2. 2. Okay, for nth root, just a minute.
ओके, सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, nth रूट लेट इट रीच द kth रूट, k हो गया, ये हो गया k minus 1. ओके, दिस वैल्यू इज k minus, okay, this value is k minus 1 into g1 plus ये हो गया n to the power k minus 1 divided by g1. Are you clear? ये देखो स्क्वायर रूट के लिए यहाँ पर क्या डाला क्या था, इफ माई टू कंप्यूट द स्क्वायर रूट इफ माई k वैल्यू इज 2, तो ये क्या हो जाएगा, व्हाट इज द फॉर्मूला? G1 plus n by g. यही आ रहा है ना, दिस वैल्यू. Okay, so in order to compute the nth root, we are instead of this particular one, we are going to put, क्या put करेंगे? We are going to put this formula. Are you clear? मैम Hmm. मैम आपने पिछले क्लास में G1 का, मैम जो डिनोमिनेटर में G1 लिखा हुआ उसका पावर k minus 1 बताया था. एक मिनट रुको, G1 का, हाँ हाँ G1 का होगा. क्वेश्चन नंबर 18, हाँ G1 का होगा. I just made it. यहाँ पर हाँ G1, as we are going to multiply here k minus 1, here we are going to find out G1 to the power k minus 1. Okay, this is the formula for the nth root. Okay, are you clear? Now check question number 19. What is the question? Here we need to find out the, Binary representation. आज तुम लोग का कुछ क्लास है? Do you have any class after the lab? मैम 2 p.m. 1 p.m. से Which class is there? फिजिक्स. Physics का physics कोर्स खत्म हो चुका है. हम बच्चा Oh, ma'am. और कौन सा क्लास है? DM. डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. वो भी है शायद से, खत्म नहीं हुआ होगा. No man. थोड़ा सा बचा. रिविजन हो रहा है, ऑलमोस्ट हो गया. Okay. On Friday on Friday when you have class? 1 p.m. Sorry, 1 to 4, 1 to 4. 1 to 4. Now come to question number 19. So how it will be done? Anyone? Write a Java program that puts the reminder. binary reminder
निकाल के करेंगे. सो रिमाइंडर में यहाँ पर क्या करेंगे, n mod 2 करेंगे. ओके. एंड स्ट्रिंग, यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग लेंगे. सो स्ट्रिंग में क्या कंकैटिनेट करेंगे, str प्लस रिमाइंडर. ओके. सो लेट माय नंबर हियर इज क्या है, let we are going to convert 24 to the binary. So 24 divided by 2 कितना आ रहा है वैल्यू, 12. What will be the remainder, 0. So here we are going to write remainder is equals to n mod 2, then str is equals to remainder प्लस str. तो यहाँ पर कितना आ गया, 0 ऐड हो जाएगा. 0 प्लस str का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, a string. So str कितना हो जाएगा, what will be the value of str, 0. Then n equals to n by 2. n is equals to n by 2. n by 2 हो गया तो कितना होगा, 12. n by 2 कितना है, मैम 12. सो अगेन डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 6, यहाँ पर आ गया 0. तो पहले यहाँ पर 0 प्लस str में कितना है, 0 है. तो आंसर कितना आएगा, 0 0. ओके. आई एम जस्ट राइटिंग द कोड, चेक इट आउट. फिर ड्राई रन करेंगे. क्लास क्वेश्चन 18. जो कहते हैं पहले शुरू कर देना अपना मुझे. हां 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 Okay, after this we will move to the question based on method. New scanner system.in. Okay. IT reminder. While not equals to 0, remainder is equals to remainder plus str. And यहाँ पर डेसिमल लिया गया है, डेसिमल is equals to decimal divided by 2. So here every time I am writing down the steps to print the value of str. Then str. Let will run the code. Enter the decimal. एक नंबर बताओ. Tell me one number. ये आउटपुट प्रिंट करेगा रिमाइंडर. Okay, here it will print the string and here it will print the how नंबर कितना डिवाइड हो रहा है. Now tell me one number. 15. I am going with yes 15.
Yes, ma'am. Okay, now check. पहले कितना आया? What is the remainder? 15 divided mod 2. Remainder here is 1. Okay, STR में कितना आ गया? 1 आ गया. Then decimal, the number is divided by 2, then it is 7. 7 आ गया. फिर 7 का रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1. 1. So यहाँ पर कितना आ गया? 1. पहले ये 1 आएगा because here it is written remainder, then it is concatenated with string. So 1 1 आ गया. Then 7 divided by 2 is 3. Again the remainder is 1. पहले ये 1 append 1 plus 1 1. So this is the value. Okay. Again तुम्हारा number 3 by 1 1 आ गया. So 1 mod 2 it is 1. पहले 1 आ गया, उसके बाद ट्रिपल 1 because we are appending remainder with str. Then divide कर दिया 0. So the final answer here will be 4 ones. Take another number. Let here take 17. पता चलेगा कैसे append हो रहा है. देखो 17 में रिमाइंडर कितना आया? What is the remainder here? 1. 1. So तुम्हारा str में कितना आ गया? 1 आ गया. 1. 17. हाँ, 17 by 2 it is 8. 8. So 8 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ गया? 0. 0 आ गया. देखो 0 कहाँ पर अपेंड हुआ है? STR के पीछे. हाँ, पहले क्या हुआ? 0 आया, उसके बाद क्या आ गया? STR आया. सो हम लोग जब निकालते हैं, हम लोग का कैसे जाता है फ्लो? डाउन से अप जाएगा. जो सबसे लास्ट में वो कहाँ पे रहेगा? सबसे पहले रहेगा, है कि नहीं? देखो जो लास्ट में है वो कहाँ रहेगा? पहले रहेगा. यहाँ पर पहले आ रहा है ना 1 सबसे पहले कंप्यूट हुआ था. 1 लास्ट को गया, 0 पहले आया. उसके बाद क्या है? 4 है. सो 4 को जब डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया. 0 कहाँ पर है? एट फर्स्ट लोकेशन. उसके बाद क्या है? 0 1. ओके. एंड लास्ट में क्या आया है रिमाइंडर? लास्ट वैल्यू का रिमाइंडर कितना आया है? 1 आया है. Yes, ma'am. So it is written as what? 10001. This one मैम रिमाइंडर 17. 0 आया लेकिन क्वेश्चन ये देखो मैं यहाँ पर, हाँ यहाँ पर 2. This one is 8 1 2 4. यहाँ पर 0 आ गया. ये 2 2s are 4. This one is 0 2 1s are 2. ये हो गया 0. तो ऐसे कैसे लिखोगे? 10001. ठीक है. पहले मेरा 1 आ रहा है, 1 आ गया. उसके बाद रिमाइंडर कितना आया है? व्हाट इज द नेक्स्ट रिमाइंडर? 0. 0 0 यहाँ पर अपेंड हुआ. उसके बाद का रिमाइंडर क्या है? 0. 0. Now 0 is appended here. Next value is 0. So 0 is appended here. Next value is 1. 1 is appended here. Are you clear? How it is being done? Write down the code. इसलिए यहाँ पे लिखा गया है रिमाइंडर प्लस str. मैम 0 के लिए एक और केस ऐड करना होगा ना? 0 के लिए नहीं, वो 0 जब 0 होगा के वो लिए। लूप से बाहर आ जाएगा ना. 0 जब होगा वो लूप से बाहर आ जाएगा ना. मैम वैसे में STR में कुछ इनिशियलाइज नहीं होगा ना? str blank string है. Initialize हुआ है. It is a blank string. And question number 21. Question number 19 and 20. Just a minute. 19 and 20. 19 we are discussing ना this one. हाँ वो कंप्लीट हो गया. 19 भी कर लिया, 20 हो गया ना? हाँ. Okay.
ओके 20 ये स्मॉलेस्ट फैक्टर निकाला है 20. कैन यू डू दिस वन क्वेश्चन नंबर 20? Yes, ma'am. हाँ बनाओ इसको. देन वी विल स्टार्ट विथ हाँ 2150. हाँ जो लोग बना दिए शेयर योर स्क्रीन. क्वेश्चन नंबर 20. Sure. ये क्वेश्चन नंबर 20 का है. Yes, it's correct. Stop sharing. Okay, check question number 20. So in question, what is a write a program that reads an integer, display the smallest factor in increasing order. So you are supposed to divide the number and you are going to find out the smallest factors of a particular number. So हम लोग कहाँ से division शुरू करेंगे? We are going to start dividing it from divide कहाँ से शुरू करेंगे? 2. So first we will check whether it is divisible by 2 or not. Then we will go with 3. Okay, in this manner we are going to find out. So your number divided by 2 or sorry index or I, here it will be, जब तक remainder अपना 1 नहीं आता है we will do the division. If number mod I is equals to 0, if it is divided by 0 then print the value of I. Here else I plus plus. Enter a number 12. Now 12 divided by 2.
1 आ रहा है क्या तुम्हारा रिमाइंडर? Here 12 divided by 2, okay, equals to कितना आ रहा है? What is the value here? 6. यहाँ पर चेक करो. Are you there? So now here check it. 12 mod 6 equals to is 12 mod, यहाँ पर I का वैल्यू 2 है, equals to 0. Now condition is true. So if the condition here is true, यहाँ पर print कितना होगा? 2. Again here 12 divided by 2 कितना आ गया? 6. Again check here. 6 divided by 2 equals to कितना है? 3. Now check here. 6 mod what will be the I value? I का वैल्यू कितना होगा? 2 is equals to 0. Then यहाँ पर प्रिंट कितना होगा? 2. Then 6 divided by 2. What is the value? 3. 3 divided by 2. क्या कितना आएगा यहाँ पर? 3 divided by 2. What will be the value? 1. हमें 1. तो यहाँ पर क्या हो गया? It will terminate. ये false आ गया. तो तुम्हारा आंसर यहाँ पर कितना आना चाहिए? What are the factors of 12? 12 के क्या क्या factors है जब बताओ तो मुझे. Smallest factors. 2 and 3. 2 and 3. तो यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ है? बस 2 प्रिंट हुआ है. 3 प्रिंट करने के लिए क्या होगा? अब देखो आई में क्या वैल्यू है? What is the value in I? 3. So can I write it outside the loop? System.out.println I. यहाँ पर आई अपडेट नहीं हुआ है क्या? Here number divided by 3 divided by 2 is 1. Here I made the mistake. Close. Okay. Now check another number, 24. So what are the factors of 24? यहाँ पर पहले क्या करोगे? 24 divided by 2, it is 12. So check 24 mod 2 equals to कितना है? 0. So it is printing 2. Again here 12 divided by 2. यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6. So here 12 mod 2 equals to 0. Again the condition is true. True print हो गया. यहाँ पर आ गया 12 6 आ गया. So the my next value here is 6 divided by 2. कितना आ जाएगा? 3. 6 mod 2 equals to 0. Again the condition here is true. तो यहाँ पर print कितना होगा? 2 print होगा. 6 by 2 it is 3. Now check 3 divided by 2. 3 divided by 2 equals to 1.
ये ट्रू है, दिस वन इज ट्रू, ये 1 हो गया, ये क्या हो जाएगा फॉल्स, सो इट विल कम आउट ऑफ द व्हाइल लूप। यहाँ पर प्रिंट कितना करेगा नंबर, व्हाट इज द वैल्यू इन नंबर, नंबर में कितना है, व्हाट इज द वैल्यू इन नंबर, इट विल प्रिंट नंबर इज 3। आर यू क्लियर? My screen is not visible. Is my screen is not visible to you? हाँ विजिबल। 120 देखो, in 120 check it, ये क्या हो गया, 120 divided by 2 कितना आ जाएगा, 60, so 120 mod 120 mod 2 equals to 0, तो प्रिंट पहले क्या करेगा 2, उसके बाद क्या आएगा 60 divided by 2 equals to कितना आएगा 30, 60 mod 2 equals to 0, यहाँ पर प्रिंट कितना क्या 2, my next number here will be 30 divided by 2 कितना आएगा 15, check here, 30 mod is mod 2 equals to 0, तो प्रिंट कितना करेगा 2, अगेन हो गया तुम्हारा नेक्स्ट नंबर 15 आ गया है, 15 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 15 divided by 2 7, now 7 is not equals to 1, again condition true, so 15 mod 2, what will be the value, equals to 0, here my condition is false, so ये false हो गया तो मेरा I का value कितना हो जाएगा, what will be the value of I? I is updated to 3. Now check my number. Number अपना कितना है? 15 divided by 3. What is the value? 5. So ये कितना हो गया? 15 mod 3 equals to 0. Condition is true. यहाँ पर print कितना करेगा? 3. So 15 divided by 3, it is equals to 5. 5 आ गया, अगेन यहाँ पे चेक करो, 5 divided by 3, रिमाइंडर कितना आ रहा है, what is the remainder here, what is the quotient here, sorry, what is the quotient, यहाँ पर क्वेश्चन कितना आएगा, आर यू देयर, यहाँ पर क्वेश्चन कितना आएगा 1. सो 1 आ गया, 1 आ गया तो इट इज इक्वल्स टू 1, वो लूप से बाहर आ जाएगा। अब मेरा नंबर में कितना है, व्हाट इज द वैल्यू इन नंबर, नंबर में कितना है वैल्यू 5, सो इट विल गेट प्रिंट 5। So this is question 20. We have already discussed 21. Prime number देख लेना खुद। We are going to do the program of method, वहाँ पर ये prime number है, there we will check it. Okay? Should I move to the next assignment?
What about 23, 24? You do this too. I will show question number 22 right now. You try Okay, this ma'am. too. Okay. Should I move to the assignment 6? Wait, ma'am. Okay, do it. ये बना लो. We will move to the next one. Over. All of you completed this one? Yes, you are correct, Kurman. Over. Should I move to the next question? All of you completed? Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Completely. Okay.
Do this one. Do the first question of the method. ये पहला वाला बनाओ. Okay. Are you doing? Are you doing? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, now check the question number 1. What is the assignment here? Assignment 6. And we have discussed the programs on array. Array का program हो गया है ना? Okay, for this question number 1, you just do first 4 bits. Okay, addition simple, subtraction simple, multiplication simple, division simple, and this one remainder simple. चला बनाओ. Then we will discuss this question number 3. ये question 3, question number 4. Then this one is prime number. Okay. We will discuss only few questions and you are going to do the rest of the questions. Now this question number 11. Just a
आर यू क्लियर? बना सकता असाइनमेंट 6? यस मैम, मेथड बन। देखो क्वेश्चन 1 असाइनमेंट 6, import java.util.scanner. आई एम शोइंग यू वन क्वेश्चन। यहाँ पर क्या करोगे? Public, the method name here is integer public static int addition simple int x comma int y. ओके, सो यहाँ पर रिटर्न क्या होगा? What is the value here you are going to return? X plus y. Similarly, यहाँ पर कौन सा मेथड कॉल करोगे? The next method here is multiplication. यहाँ पर वैल्यू क्या होगा? So what is the next method here? Division. So what will be the rule for division? X divided by y. Then what will be the next method? Remainder. Return x mod y. Over. हो गया? Then in main method, take the value of number. Next int. Next int. उसके बाद क्या करोगे यहाँ पर? Call the method addition simple, pass the value a comma b. Sum of two numbers. Then product of two numbers. Then difference of two numbers plus
Just a minute. Subtraction simple. Okay. So in division, what you need to check? You need to check if B is greater than 0 or not. If B is greater than 0, then you are going to divide the number. Otherwise, क्या होगा? Yes, others, you are correct. Otherwise, what will happen? अगर y का वैल्यू 0 हो गया तो क्या होगा? Division is not possible. Else division is not possible. You need to write the statement. Division is not possible. Okay, here I am doing everything in a single statement. Then next one is your remainder. Remainder is subtraction में भी लिखना. One should be the larger than the other. Okay, if A greater than B, then call this one. Else, क्या करोगे? If B is greater than A, then change it. Otherwise, you will get the result in the B comma A minus. Enter the value. Okay, sum of two number is 7, product is 12, difference is 1, division is 0 because here we are going to find out the integer value and the remainder here is 3. Okay, write down this code. लिख लो. Write down this one.
today you don't have class at 3 to 4? Yeah. No, ma'am. No class. So we will put one class. class रखेंगे from 3 to 4. Okay? Mute your mic. Over. मैं थोड़ा नीचे को स्क्रॉल कीजिए। Over. हाँ सर, हाँ सीधे रहो। MCA
Question 3. Yes, you are correct. Over all of you, question number 1. Yes, ma'am. Okay. Do question number 2. 2 बनेगा? Question 2. कौन सा question है? Yes, it is correct. It is correct. Do question number 2. Question 2 क्या बोला है? Pentagon का दिया क्या है? Formula is given to you. Okay, the number pentagonal number is defined as this one, n into 3n minus 1 by 2. So first few numbers are this one. So यहाँ पर डालना है for n equals to 1 तुम्हें मिल जाएगा ये. When you are going to put n equals to 2, you will get this value. So similarly, you are going to find out. Okay, so यहाँ पर बोला गया है first 100 pentagonal numbers find out करना है and 10 in each line. So check it how you are going to do it. Oh, we don't need the input statement. So we are going to find out the pentagonal number. So method क्या होगा? Public static int get number int n return n into 3 into n minus 1 divided by 2. Okay, in the main function, but I need to write. So how many numbers we are going to display per line? So number of numbers that we are going to display per line is 10. So here for int I is equals to 1. तो यहाँ पर क्या बोला गया है? How what first 100 numbers निकालने हैं. So I less than equals to 100. I plus plus. Okay. Here if I mod 10 is equals to 0, तो क्या होगा? Here we are going to put a line break or a blank space. Otherwise, we are going to find out the number. Else,
यहाँ पर मेथड कॉल करो, प्रोवाइड अ ब्लैंक स्पेस, take a plus. What is the method name here? Get pentagonal number. And here you are going to put the value of I. Is the method name is same here? Change get GETPEN. Okay, run the code. आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो यहाँ पर 9 आ रहा है, तो 10 करने के लिए यहाँ पर कितना करना पड़ेगा? देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो आया ना आंसर वही तुम्हारा 1 5 12 22. You are getting 1 5 12 22 and so on. Okay, are you clear? बना सबका ये क्वेश्चन? Completed? Question number 2. Have you completed question number 2? Yes, ma'am. Now, complete it quickly. So, do question number 3. Do question number 3 and share the screen. We have already discussed how to find the reverse of a number. बस तुम्हें इस पैलिंड्रोमोरिक मेथड लिखना है. Do question number 3 and 4. Do question 3 and 4. Over? Are you doing question 3 and 4?
doing question 3 and 4? Okay. Raghav, you are correct. Yes, others, you are correct. Do the next one. Hmm. Yes, you are correct.
Correct. Number is counting down. Yes, correct. Do the next one. Raghav. Raghav, do the next one. Yes, ma'am. बाकी सबका मैम हाँ क्वेश्चन थोड़ा दिखाइए. हाँ. Just a minute. This one is a question. Asutosh. You are correct. This palindrome. Then yes, it is also. एक ही प्रोग्राम को 2 बार किए हो आशुतोष? Yes, ma'am. Okay. Do the next question. Leap year. It's also correct. Raghav. What about others? Gurman. Gurman, are you there? It's not yes. Yes. Yes, ma'am. Are you doing? Yes, ma'am. Yes, it's correct. You check for the condition and or डालो ना. Put and or operator others.
Yes. Yes, that's correct. Akanksha, do the next question, prime number. Sorry, prime number not this one. Palindrome जिन लोगों का हो गया, leap year बनाओ. Then we will discuss the prime number. बन गया सबका leap year? मैम जो रिवर्स वाला क्वेश्चन है उसमें रिटर्न में क्या लिखेंगे? रिटर्न में क्या बोला गया यहाँ पे? ट्रू फॉल्स ना. यहाँ पर रिवर्स में तुम रिटर्न रिवर्स नंबर को करोगे, ठीक है, और एक पैलिंड्रोम मेथड लोगे, वो रिटर्न क्या करेगा? ट्रू और फॉल्स. यस मैम. ओके, वो पैलिंड्रोम में तुम रिवर्स को कॉल करोगे. ओके, इन पैलिंड्रोम नंबर दोगे, उसमें यहाँ पर रिवर्स मेथड कॉल होगा. फिर दोनों को चेक करोगे. इफ नंबर इज इक्वल्स टू रिवर्स, देन इट विल रिटर्न ट्रू. ओके. अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा. ओवर. मैम क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल नंबर ऑफ डेज बताना है 2000 ईयर टू 2000. Yes, total number of days. Whether it is 365 or 366. Correct. Yes, you are correct. In this one, you have some easy questions based on the methods. Use करके easy questions ऐसा.
ओके, ट्राई दिस क्वेश्चंस. ये सब क्वेश्चंस थोड़ा ट्राई करना स्ट्रिंग का. एंड दिस लास्ट क्वेश्चन स्ट्रिंग का है. Okay, now check for the prime number. I will do this one. You are supposed to do question number 6. बता दूंगी. 5 and 6 just check it. ये palindromic prime है, ये हो जाएगा. 6 and 5 and 7 I will do it. Okay. So question number 5. You need to check whether a number is prime or not. Question 5. Import java.util.scanner. New scanner system.in. So here पहले प्राइम नंबर के लिए देख लो. What is the method name? Public boolean is prime. So public static boolean is prime int number. So if my number is equals to 1, prime होगा क्या? If the number is equals to 1, it is prime number. No, 1 prime है तुम्हारा. no, ma'am. No, ma'am. False. Okay. So in the next statement, if number is equals to 2, 2 होगा तो it is prime. तो true return होगा. Else if. Okay. Then in else part, we are going to use a for loop. int I equals to हम लोग सेट कर देंगे. You start it from 2. And 2. Okay, you start it from 2 to less than. Typecast here int math dot sqrt. Value here will be I, number, and I plus plus. So if number mod 2 number mod I equals to 0 हो गया तो क्या होगा? If the number is divisible, then what will be? ये क्या होगा? हो जाएगा. Then return यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? We don't need this one. दूसरी शुरू करो. I देखते हैं. Okay. So if number is equals to 0, then return false. Otherwise return क्या होगा? What will be the other statement?
मैम रिटर्न ट्रू। Return true. Okay. Scanner essay. यहाँ पर वेरिएबल ले लो. We will check for the conditions. So int n one variable system.out.println, enter the number, n is equals to essay.next int. Okay. And then we need to check whether it is a prime or not. यहाँ पर क्या पास करोगे? Is prime, put the value. Okay, now run the code. Check. 17 is a prime number, तो तुम्हारा यहाँ पर आंसर क्या आ गया? True. Again I will run the code. 12. What is answer? False. Again run the code, enter the value 2. 2 के लिए क्या आ रहा है? What is the output here for 2? मैम मैम यहाँ पर 10,000 के लिए लिखा है मैम, बिटवीन 10,000 के अंदर जो प्राइम नंबर है उसको डिस्प्ले करना है। पता है, इसे बाद में करेंगे, पहले प्राइम नंबर आ जाए उसके बाद वी विल गो फॉर द 10,000. ओके 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 ओके। हाँ, सो यहाँ पर 2 के लिए क्या आ गया? Here we need to take another statement. Else if अगर 2 होगा तो क्या होगा? Return 3. 2 के लिए हमारा ट्रू आया था ना? 2 is a prime number. We got a true for true. Yes, ma'am. हाँ, just okay. Else 2. हाँ, okay. So यहाँ पर क्या लिया गया है? math.sqrt number. So let my number, यहाँ पर number ले लो 12. What will be the I का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा? I will start from 2. 2 math.sqrt 12 कितना होगा? It will be 3. Okay, बस एक ही नंबर चेक करेगा. So now here math.sqrt number square root of 12, it will be 3 point something. लेकिन तुम लोग यहाँ पर क्या किया? टाइप कास्टिंग करे हो int. So it will go to 2 to 3. So I value is 2. यहाँ पर 2 is less than 3. My condition here is true. As the condition here is true, it is going to check. So number का value कितना है? 12. Mod 2 equals to 0. The condition here is true. तो return क्या करेगा? It will return a false. Return क्या? False return क्या? Now if I will run for another time, now I have entered 13. 13 हो गया. Square root of 13 कितना आएगा? Again it will be 3 point some value. Okay, so 13 mod 2 equals to 0. यहाँ condition false आ गया. So it will not return the false statement. Loop से बाहर आ जाएगा. यहाँ पर return क्या करेगा? What will be the value it will return? It will return the true value. So the question here is, write a program to find the number of prime that is less than 10,000. तो यहाँ पर क्या करोगे? Enter the number. For नहीं चाहिए. So for int I equals to
आई इक्वल्स टू कहां से शुरू करोगे? I less than equals to 10,000. I plus plus. If is prime I, तो प्रिंट क्या होगा? अगर ट्रू होगा तो प्रिंट क्या करोगे? देखो, आर यू गेटिंग द आंसर? तो 4 आ गया, 6 आ गया, इज प्राइम equals to 1 false. For 2 is to it will be printed 2. For 3 printed and I. What is correct? Just a minute. So this is QRT 2. Okay. Your code is correct. Yes, your code is correct. Okay. Do the modification here. Okay, here it should be I less than equals to 2. Prime number. Question number 5. Are you clear, all of you? Question 5. Excuse me, मैम. मैम जो एल्स पार्ट में जो लिखे ना फॉर इंट आई टू 2 वो वाला मुझे थोड़ा समझ नहीं आया मैम. अरे देखो, ये आई मेरा नंबर क्या है? मुझे निकालना है 16. इज अ प्राइम और नॉट?
तो प्राइम नंबर का लॉजिक क्या है? वी नीड टू डिवाइड 16 फ्रॉम 2 टू कहाँ तक डिवाइड करेंगे? 15 तक डिवाइड करेंगे, isn't it? To check whether it is a prime number or not. Whether it is divisible by 2, then 3, then 4. तो डिवाइड करते हुए जाएंगे, yes or no? Yes, ma'am. So हम लोग क्या किए Yes, हैं? ma'am. Instead of dividing by all those number, we will only check up to root 16. Root 16 कितना है? What is the value of root 16? Square root of 16? 256. Square root over 4. SQRT of 16. What will be the value? कितना आएगा? 4 आएगा. तो अगर हम लोग 2, 3 and 4 ये तीनों नंबर से बस चेक कर देंगे कि whether it is divisible by 2 or 3 or 4. Can't we check whether it is a prime or not? Yes, ma'am. Instead of dividing from 2 to 15, can't we check from up to square root of that number? 2 to square root of that number. तो हम लोग का नंबर अब जो चेकिंग है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा. 2 से 15 तक है, कितना नंबर के साथ चेक करोगे? 14 नंबर के साथ. बट इफ यू आर चेकिंग फ्रॉम स्क्वायर रूट ऑफ 16, 2 टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, हाउ मेनी नंबर्स के साथ तुम कंपेयर कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो? यहाँ पर कितने नंबर के साथ डिवाइड कर रहे हो? 3. तो कौन सा कम टाइम लेगा? स्क्वायर रूट, हाँ कम टाइम लेगा. ओके. सो इन क्वेश्चन नंबर, देखो ये जो क्वेश्चन 7 है, ओके, यहाँ पर क्या बोला गया है? ट्विन प्राइम आर द पेयर ऑफ प्राइम नंबर दैट डिफर बाय 2. जो 2 से डिफर होगा. सो तुम्हें कौन सा लॉजिक यूज करना है? यू नीड टू यूज दिस लॉजिक. ओके, इसी लॉजिक को यूज करोगे और ट्विन में यहाँ पर क्या करोगे? इज प्राइम आई, यहाँ पर बस और एक कंडीशन क्या डालोगे? एंड इज प्राइम आई प्लस 2. ओनली दिस one statement you need to add. और यहाँ पर क्या होगा? प्लस आई प्लस 2. आर यू क्लियर? इन क्वेश्चन नंबर 7 बस यहाँ पर यही दो कंपैरिजन करोगे. Okay, I and I plus 2, if they are equal, then they are called as your twin prime, like 3, 2 and 3, 3 and 5. So these are your twin prime numbers. 3, 5, 5, 7. Okay. Try rest of the question. Okay, in the class from 3 to 4, we will discuss another 1-2 programs on array. Thank you all.